ठीक है. So the next topic is about the web scraping. Okay. So let's suppose like if you want to get some information from a website, okay, let's say like an um, article you have seen somewhere, or you visited on a website and you want to bring some data from that website, or you have seen a news blog or something where you can find some tables and you want to create a data set out of it. Okay. So what you will do in that case, okay, you can do one thing, that is copy and paste kar sakte hain, right? But what if you want to find data and create it in a large amount, okay, on a daily basis and as quickly as possible? If you want to do that in such situations, actually copy and paste, if you try to do, it will not work, right? And there you will need this term called as web scraping. Okay. So in web scraping, actually there are three different things, specifically we can say the two important things, that is the libraries like request and the beautiful soup library. Okay. So we'll first understand about the request module actually. So request module or request library is used for making the HTTP request to a specific URL and then returns the response. Okay, right. So Python रिक्वेस्ट आपको इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है फॉर मैनेजिंग द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पांस. रिक्वेस्ट इन द सेंस लाइक until and unless you request for something you will not get a response, no? So that is like how the request model works. So request ka installation is not very much difficult. Okay, it's simply a pip install request you will write and it will get installed in your system, right? So how you make a request now, that is one thing. How you can make requests to get the values actually. Okay. So Python request का जो module है, it has several built-in functions to make HTTP requests to specified URL. Like जैसे आपने पढ़ा हो गया PHP में भी, you might have got the methods like get है, post है, put है. Okay. Then patch Yes, sir. is there, head is there. ऐसे बहुत सारे request के methods are there actually. Yeah. So कोई भी HTTP request है that is meant to either retrieve the data from a specified URL or push the data to the server. यही दो काम होता है for these request module. Okay. So it works as like we can say request response protocol between a client and a server. This module I'm saying out. Okay. So we will be using the get request actually because we need to get the data. We don't need to push the data anywhere now. So we are going to get or retrieve the data. Okay. So get method is just used to retrieve the information from It's any 11 given o'clock. server using a given URL. Okay. So it will this get method will send the encoded user information depended on the page content, let it be any of the website. Okay. So what we're going to do is I'll just show you a simple code here. So what we are going to do is, suppose we have this. Okay, why is it not coming here? What it is? Yeah. So you can see what we are doing is from BS4 we are importing beautiful. So I'll tell you about that as well. And next we have import the request. Okay, so REQ is my variable where I'm taking request. So what I'm trying to do is trying to get data from a website. Okay, and I'm just taking an HTML parser for it, and all we are doing the prettify. And what is prettify is, so HTML parser actually whatever the content I'm trying to get, request message जो भी content है, I'm taking that and in the HTML parser actually, and the codes will be in a systematic order if I write a prettify function. Okay, so prettify will keep the codes in a systematic order actually, or if any error is received we will try to get the error also. So क्या करते हैं पहले तो I'll just comment it out, इसको भी comment कर देते हैं. Suppose we are trying to get data from any of the website. Okay, let it be anything like
I'll keep the knowledgeacademy.com kind of, okay, or I can anything like um, let it be the analytics.in itself. Okay. Now, what we are going to do is we will check whether we are going to get any response or not. Okay, so I'm just going to print whether I'm getting any response. So let us see this now. Execute this. So response 200 I'm getting, right? That means this is a success code actually. So whenever you get a code of 200, that means you are getting the response from that website while fetching. Okay, now we need to see the content of it. Okay, so instead of REQ, now I'm going to, okay, I'll just write it there. Check response, and I'll write the success code 200 will come. Okay, now next is we are going to check for the content of the website, what it is fetching. Okay, let me just हमेशा run it. 200 आएगा क्या? क्या हमेशा बोलिए? 200 आएगा इसके अंदर? या ना हमेशा 200 आएगा चेक में? 200, ये देखो, ओके सर. ठीक है. दिस आउटपुट इज कमिंग 200. सो 200 का मतलब कि इट इज getting the data, that is success. Okay, so it is connecting to the website and data retrieve हो रहा है. Now what is it retrieving? Let's see. Request dot content, let us run this. So output में you will get the content now. ये देखो, you are getting content now. These are the content of the website. So this is the content. Right? So this is not coming in a systematic order. If you can see, इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा अभी. सर ये Exact. पूरा HTML का जो हम लोग वो पेज बनाते हैं, HTML का जो रहता है या फॉर्मेट वही है ना ये पूरा, उसमें और हाँ, एक्स्ट्रा ये कुछ नहीं है इसमें, कम्प्लीटली है ना? वही फॉर्मेट ही आपको देता है. ठीक है. सो अभी आपको देखो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा काफी वाइडली, बिकॉज सारे कंपैक्ट करके ही दिया है. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज दिस ब्यूटीफुल सूप. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सूप में वी आर टेकिंग दिस कंटेंट एज एन HTML पार्सर डाल करके, एंड वी आर नाउ प्रिंटिंग दी प्रिटिफाई. ओके, so let us now run this. So abhi aap, if you can see the output as compared to the previous version what I made, you saw this. Okay, so this is now in an order, you can say it is coming in some orders. Okay, right. So ye aapka pehla step hai actually to understand how to get a request from a website. Okay, this is the first step ahead for this. Okay, now moving to the next, how the response work actually. ठीक है, response क्या होता है, और अगर response आ रहा है, how you will find it, status code क्या है, if any error is coming, कैसे पता चलेगा कि what is that error and all. ठीक है. So what we are doing is, अभी किसी को comment कर देते हैं. Yeah, so instead of this request dot content, अभी मैं आपको दिखाता हूँ. If I say I'm making a request and I'm just printing the URL to it. So let me just show you print.url. So this is the request object actually. तो So सर अगर हम लोग सिंपल सूप को प्रिंट कराएंगे तो भी शायद वही सेम आंसर आएगा लगभग. this is, oh, I'll have to read it. यही, let me enlarge it. ये आपका सूप है.
यस सर। है ना? अभी हाँ I'll run this. कुछ ओ अब ज्यादा और अच्छा लग नहीं, सेम सा ही है लगभग, डिफरेंस है कुछ? हल्का सा डिफरेंस है सर। है ना? सो अभी क्या हो रहा ये है, थोड़ा सा different है। व्हेन आप जब सूप रन करते हो तो ये HTML फॉर्मेट जो एक अनस्ट्रक्चर्ड में था वो स्ट्रक्चर्ड में आया, बट प्रेटिफाई जब रन करोगे तो वो एग्जैक्टली उसी सिंटेक्स में आएगा हाउ वी यूज टू राइट इट, जैसे किसके अंदर क्या रहता है। अंडरस्टूड? ओके सर। है ना? ये डिफरेंस है। हम्म अभी इसको हटाते हैं, हमें क्या रन कर रहा था, यस। तो आप यूआरएल जब रन करोगे तो यू विल गेट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कहां से आपका डेटा फेच हो रहा है। सो आई थिंक ओके, आई विल हैव टू मूव दिस टू नाउ। जैसे हमने एक लिंक स्पेसिफाई कर दी है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी द लिंक इटसेल्फ, यहां से वी आर फेचिंग द डेटा, राइट? नाउ इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैंने बोला कि व्हाट इज माय स्टेटस कोड, सो इट विल टेल यू अबाउट द स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 200, विच इज अ सक्सेस कोड, जो मैंने बताया अभी पहले आपको। ठीक है? नाउ so what exactly this beautiful soup, oh sorry, what is this beautiful soup library is doing? Okay, so this beautiful soup is the um, library which is used for extraction from the HTML and XML files. ठीक है? So it provides a parse tree actually, एक function to navigate and modify the data what it is fetching. Okay, so ये एक library है which will pull out the data from the HTML या XML फाइल से, और स्पेसिफिकली ये वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? राइट? तो दिस इज द लाइब्रेरी व्हाट वी विल बी यूजिंग फॉर द fetching of the data or parsing of the data. Okay, चलो। सर पार्सिंग क्या होता है? है पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब आप कैसे आपको डिफाइन करो, टू सी द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा। कंपोनेंट्स का मतलब कह दिए, जैसे HTML में हमारे पास में एक हेड हो गया, एक बॉडी हो गया। ठीक है? सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हम समराइज करते हैं, जैसे कि अगर मान लो ये आपने लिखा हुआ है, ठीक है, आपने मान लो यहाँ पे HTML लिख दिया है, ठीक, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, फिर इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, या मान लो यहाँ पे आपका हेड है, ठीक है, देन हेयर आपका बॉडी है मान लो। सो इफ यू आर क्लोजिंग इट, सपोज अगर मैंने बॉडी क्लोज कर दी, तो बॉडी के बॉडी ये एक पार्सर हो गया या एक ये कंपोनेंट हो गया, हेड टू हेड विल बी वन मोर कंपोनेंट। ठीक है? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को पार्ट या कंपाइल करना, दैट इज कॉल्ड पार्सिंग। ओके सर। ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो छोटे छोटे आपके बोल सकते हो, क्या कहना चाहेंगे, एनालिसिस स्टेज कहते हैं इसे। जैसे हम एक मॉडल भी क्रिएट करते हैं तो एक एक स्टेप करके चलते हैं, तो ये जो सब स्टेप्स होते हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं एक प्रोग्राम के, और इन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स का कंपाइलिंग को कहते हैं पार्सिंग। समझे? यस सर। तो ये आपको हाँ ब्यूटीफुल सर। करेगा उन छोटे छोटे स्टेप्स को पार्स करने का, इसीलिए वो इतना स्ट्रक्चर फॉर्मेट में दिखाता है। ठीक है? सो पार्सिंग दी HTML का मतलब ये होता है कि एक रॉ HTML कोड से थोड़ा यूजफुल इंफॉर्मेशन उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बना करके लाना। ठीक है? सो ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी जो है दैट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ HTML पार्सिंग लाइब्रेरीज ओनली। जैसे कि उसके HTML के पार्सिंग कुछ लाइब्रेरीज हैं, HTML डॉट पार्सर है, LXML है, और HTML5 लिब है। ठीक है? सो इन्हीं सब के ऊपर में बना हुआ है ये। तो प्रेटिफाई रन करने से यू विल गेट पार्सर ऑफ द HTML। चलो आगे देखा जाए, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ,
सो अभी देखो, इफ यू वांट टू गेट द टेक्स्ट आउट ऑफ द website what you are scraping, say suppose now we are scraping this website, okay, I just want to get the text out of it. सो टेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा। तो टेक्स्ट इज बेसिकली कि उस वेबसाइट पे जितने भी टेक्स्ट हैं सिर्फ वही टेक्स्ट आएंगे, अभी कोड नहीं आएगा, ओनली द टेक्स्ट पार्ट विल कम। सी, आई विल जस्ट टेक द सेम वेबसाइट हियर आल्सो, ओनली द टेक्स्ट विल कम, अभी कोड नहीं मिलेगा आपको। जितने जितने स्पेसेस में टेक्स्ट है ओनली टेक्स्ट विल कम है, ठीक है। से व्हाट इज अ कॉलेज वेबसाइट, ये यस सर, शायद। बस एग्जीक्यूट। सो हाँ ये देखो आ रहा है, ये आपके कॉलेज का वेबसाइट का सिर्फ टेक्स्ट पार्ट है जो आपके वेबसाइट पे टेक्स्ट है, ठीक है, जो भी इन्होंने जैसे जैसे रखे हुए हैं। सो दिस टेक्स्ट इज गिविंग ओनली द टेक्स्ट पार्ट। अभी इसके बाद यू कैन गेट लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आप टाइटल भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन गेट द टाइटल आल्सो, एक छोटे छोटे पार्ट्स में यू कैन फाइंड आउट प्लीज इंस्टेड ऑफ गेट टेक्स्ट। अगर मैं रन करूं, I'll run this, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट में वी आर टेकिंग द टाइटल और टाइटल को प्रिटिफाई करके जस्ट वी आर रनिंग इट। सो दिस विल गिव द टाइटल टैग, एक्चुअली सिर्फ टाइटल टैग मिलेगा। ओके, आई टेक योर वेबसाइट एंड इन केस अगर आपने कोई गलत वेबसाइट को फेच किया, ठीक है, जिसके कंटेंट नहीं आ सकते हैं, तो वी विल सी हाउ इट विल शो यू। देखो टाइटल में क्या आ रहा है, बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन मथुरा यूपी इंडिया, राइट। सो आपको एक जो भी आपका वेबसाइट का पहला टाइटल है वो आएगा। अभी इसके बाद यू कैन रन विद द नेम आल्सो, टाइटल का नेम। सो टाइटल का नेम अभी व्हाट यू आर गेटिंग अंदर टाइटल आया था, अब इफ यू आर रनिंग टाइटल डॉट नेम क्या आ रहा है, prettify problem, okay, एक मिनट, oh yeah, we will just have the name now, why to prettify it then। सो नेम में तो बस टाइटल ही आने वाला है, राइट, कुछ नहीं होगा। टाइटल डॉट नेम मतलब सिर्फ टाइटल का टैग बताता है कि टाइटल का टैग क्या है, ठीक है। पेरेंट नेम होगा तो इट विल टेल यू अबाउट कि ये HTML का है, राइट। तो दिस इज, आप फाइल के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, वी विल सी दैट, ओके। तो ये हो गया आपका टाइटल, ओके। कंटेंट कैसे देखते हैं आप वो भी देख लिए। अब टाइटल का भी आप टेक्स्ट निकालना चाहते हो तो अंडरस्कोर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो इट विल गिव यू टेक्स्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन फेच डेटा फ्रॉम अ क्लास, ओके। ओके, so abhi what we will doing is we will be taking data from the class, okay। So I'll show you this website, okay, yeah, let me come here, yeah, this website. Okay, tab, हाँ ये वेबसाइट, ओके।
So abhi, what is this? This is Flipkart का website. So we will try to take some data out of it. जैसे maybe this price या title, then उसका कितना price है, then what is the ratings, ठीक है? So एक class और IT से you will have to find out कि what contents we are fetching, ठीक है? ये एक हो गया. सो अभी देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग. ओके, दिस इज वन केस और आई जस्ट ट्राई टू पुट अप द कोड हियर. यस, देखो, ठीक है. So we have a link here for the website. Okay, what we are doing is we are getting the URL, taking p.content, taking HTML parser. Okay, content.soup find all, taking the division. So एक website को जब आप inspect करते हो, if I try to inspect this website, okay, so I can find out the different sections. Okay, if I want only this section, suppose. So in this section, if I come more insider, okay, I'll go more deeper here. Yeah. So in this class, if you see, I will have a div class also for the image perspectively. Then for the title, I will have a different, this is one more section. So inside this section, you will find one class, okay? And inside that class, you will find again one more class. So this is underscore 4R, capital R0YT, Apple iPhone. You can see this? दिख रहा है? सर ये मेरे में ही नहीं चला या फिर वैसे आप में से चल नहीं पा रहा है वो. मेरे में DIV पे अटका पड़ा. अब मेरा पिंग था, सॉरी. अभी दिख रहा मेरे है नेट क्या? पे चला. यस सर, यस सर. है ना, मैं एक बार वापस से बताता हूँ. देखो सर, ये आपका लिंक है, ठीक है. अभी लिंक पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आ रहे हैं. तो अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आते हैं इस सेक्शन में, आते हैं इस सेक्शन के अंदर आते हैं. एंड ये आपका सेक्शन हुआ ये वाला. ये सेक्शन जो है आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे? एप्पल आईफोन 14 दिख रहा है. यस सर. इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ. हाँ, ठीक है, ये सेक्शन दिख रहा है ना. सो दिस यस सेक्शन सर. इज बेसिकली आपका टाइटल सेक्शन. तो आपका ये किस क्लास के अंदर आ रहा है? डिव क्लास. ये आपका डिव क्लास हो गया, ठीक है. तो यही सेम थिंग वी आर गोइंग टू मेंशन है. तो व्हाट वी आर डूइंग इज डिव क्लास, क्लास का नेम डाल दिया हमने, ठीक है. तो ऐसे ही करके वट एवर द डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स वी वांट टू गेट, सारे कंटेंट्स को हमने लिख दिए, कौन से क्लास में आ रहे हैं वो क्लास भी डाल दिया. अब आइटम्स को एक एक करके अपेंड कर रहे हैं. नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं. इफ और एल्स, अगर डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट डाल देंगे, नहीं मिलेगा तो वी विल जस्ट विल शो नो डिस्काउंट ओवर देयर, ठीक है. तो सारे टेक्स्ट को हमने एक एक करके इंस्पेक्ट कर लिया एंड रन करने पे हमें मिल रहा है कि प्रोडक्ट का नेम ये है, जिस भी फॉर्मेट में हमने लिखा है अभी कि इस फॉर्मेट में हमें प्रिंट करके दे दो. यू कैन क्रिएट डेटा आल्सो ऑफ इट. हम अभी बस प्रिंट करा रहा हूँ. तो प्रोडक्ट नेम में वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट नेम, जो भी डेटा है. देन एक एक करके वट एवर द प्रोडक्ट नेम इट इज, है ना, जैसा भी आ रहा है, कितना डिस्काउंट है कितना नहीं है, किसी में डिस्काउंट है तो ठीक है, नहीं है तो नो डिस्काउंट इट विल शो. ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक है. समझ में आया? यस सर. हाँ है ना? सर. यस. तो ये होता है स्क्रैपिंग का सिंपल. अब देखो नेक्स्ट इज, जिसे आपको कुछ सर्च करना है, ठीक है. आपने क्या किया? टेक्स्ट डाल दिया. टेक्स्ट में आपने लिख दिया एंटर सर्च. और गूगल में कभी भी कुछ भी सर्च करते हो, यू विल हैव टू सी द लिंक्स एक्चुअली, कि आपका ऐसे जाता है google.com/search query equals to जो भी आपने टेक्स्ट दिया हुआ रहता है. अगर आपने स्पेसेस दिए हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली आते हैं, है ना. तो आपने डाल दिया यूआरएल. अब आपको क्या होगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट द यूआरएल, और वहां से डेटा फेच करके बताना है. जैसे ही अगर मैंने यूज करना है, मैं लिख देता हूँ GLA मथुरा. तो देखते हैं व्हाट डेटा इट इज फेचिंग. तो GLA मथुरा के लिए देखो, इट इज गिविंग यू दिस डेटा एक्चुअली. soup में I'm just printing up the soup, still it is showing you this. So I will go with soup.py.
ओके, तो आई एम गेटिंग एटलीस्ट गुड सर्च। अभी इसमें सर्च में वॉट एवर इट इज गिविंग, आई नीड ओनली द टेक्स्ट। ठीक है, सो टेक्स्ट के लिए अगेन व्हाट यू विल नीड टू डू, बताओ। टेक्स्ट फाइंड आउट करना है तो वापस से क्या करना पड़ेगा? डॉट गेट टेक्स्ट। हाँ, गेट डॉट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट। ये क्या क्या टेक्स्ट आ रहे हैं? जीएलए का कार्ड देखो, देन ऑल दीज वापस से रन करते सर गेट टेक्स्ट में स्लैश नहीं आता सर नीचे। हैं। गेट टेक्स्ट में स्लैश नहीं आता सर बीच में। नहीं, सिर्फ टेक्स्ट पार्ट आएगा ना, वो गूगल ने जितना भी फेच किया होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जीएलए मथुरा, तो वो कहाँ चला गया ये? हाँ, अगर मैंने जीएलए मथुरा सर्च किया तो जिसने जो भी फेच किया है अभी यहाँ पे, ये अच्छा पूरे, इस पूरे वेब पेज का आया है क्या सर ये? हाँ अभी इस पूरे वेबसाइट का, क्योंकि मैंने सर्च किया है, आई हैव केप्ट अ क्वेरी। तो मेरा क्वेरी है, देखो यहाँ तक का, तो आपको अगर लिंक आपको दिखाऊं तो मेरी क्वेरी ऐसे आई है, ये सर्च हुआ है, क्यू इक्वल्स टू जीएलए प्लस मथुरा। अगर आप गैप देते हो तो वो प्लस में चला जाता है ना। तो स्क्रैपिंग में वही किया ना हमने जीएलए मथुरा लिखा है। तो जीएलए मथुरा का जो भी आया, देखो गूगल सर्च, गूगल प्लीज क्लिक है इफ यू आर नॉट रीडायरेक्टेड विद इन फ्यू सेकेंड्स एंड ऑल, ऐसे करके जो आता है। ठीक है, यस सर। तो ये दिस इज सिंपली गूगल का सर्च का, देन जो भी आपको डेटा मिल रहा है यहाँ से आपको बोल सकते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन है, दिस इज दिस इंट्रोडक्शन आपका आया होगा, वॉट एवर द टेक्स्ट इट इज गिविंग नाउ। इसमें कोई लिंक है तो आप लिंक फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो दिस इज लाइक हाउ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट। ठीक है, और क्योंकि ये सर्च लोकेशन है तो आपको ये भी मिलेगा कि फ्रॉम वेयर, आप लास्ट के अगर कुछ चीज देखोगे तो आपको यह मिल जाएगा कि फ्रॉम वेयर यू आर सर्चिंग एक्चुअली। ठीक है, जहां से भी आप सर्च कर रहे होगे, है ना, क्योंकि ये गूगल का पेज है तो पूरे पेज का टेक्स्ट आपको निकाल करके दे रहा है, दैट्स इट। तो अगर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ से तो आई विल गेट माय द लास्ट थिंग, जैसे ये चीज रहती है ना, तो ये भी तो टेक्स्ट ही है ना एक्चुअली, दीज आर आल्सो द टेक्स्ट डेटा। तो ये भी आपको वहां पे मिलता है। अंडरस्टूड? यस सर। बहुत अच्छे। चलो, तो ये हो गया आपका वेब स्क्रैपिंग का, ऐसे आप करके डेटा फेच कर सकते हो आराम से। ठीक है, ऐसे आप डेटा सेट भी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट से ऐसे ही डेटा फेच करते हैं और उसको फॉर्मेट करते हैं बस कि किस फॉर्मेट में हमको डेटा चाहिए, दैट्स इट। ओके, यस सर। हाँ तो लेट्स स्टॉप दी वेब स्क्रैपिंग, वन मोमेंट। हम्म, स्टॉप इट।